So what we got here, we have added a Spring configuration here and just one library, and it will give you all 6 7 libraries from Spring. Then the version we have given, and then once it's done you need to configure the XML file for your bean class. So हमने क्या किया था पे, हमने एक photo class बनाया था, एक simple Pojo class, and Spring says I can convert this Pojo class into a bean. What do you have to do? Just create a bean tag in its configuration file. Make sure all these stuffs are there. This is for XML configuration. So Spring container can read this whole configuration and accordingly create bean for this mentioned class. So ID, class, then all the properties you have mentioned in your field, I mean field in your class, ID, width, height goes as a property tag. ID, width, height, and then you can give the value. Of course, these are hard coded. That's fine. And that's how we start. We make things hard coded, then we move forward with dynamic contents. Okay, Khushbu, audible? Hello? Yes, sir. ओके सो सी Yes, हमने sir. ओके ओके सो हमने स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टार्ट कर लिया है, ऑलमोस्ट 2 दिन क्लास स्पेंड किया हमने। तो एक सिंपल से एग्जांपल हमने कल क्रिएट किया और एक फीचर देखा था डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। आज हम दूसरा फीचर करने वाले हैं, तो आई डोंट थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए। तो जितने भी स्प्रिंग की क्लासेस हैं मिस हुई हमसे वो कर लीजिएगा, बाकी का छोड़ दो अभी, ठीक है। स्टार्ट करना है आपको Okay, स्प्रिंग sir. से, और उसके बाद जब स्प्रिंग में मेरे पैरेलल आ जाओ, क्लास के पैरेलल आ जाओ, देन यू कैन गो बैक टू एंड पिक द हाइपर टॉपिक्स वट वेर एवर यू लेफ्ट। ओके, सर हाइबरनेट टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। कर लिया था। ओके चलो फिर ठीक है, यस सर। चलो स्प्रिंग का फिर स्टार्ट कर लो। ओके सर। ओके ठीक है गाइस, तो नाउ वी विल सी टुडे, हमने एक सिंपल क्लास देख लिया, नाउ वी विल सी कलेक्शंस। ओके, कलेक्शंस इन स्प्रिंग कोर। So let's put a requirement, then we will try to create Java classes, and then accordingly we'll map that Java class as a bean in XML file. So first of all, what kind of collection does it has? So first starts with list, right? It's the same list what we saw in collection framework. So इसमें list type है, then it has set, then map। map का I'm a bit confused about map, but इसमें एक next होता है properties। एक बार मैप कंफर्म कर लूंगा मैं, देन सो इसमें मोस्टली ये 4 टाइप सपोर्ट करता है, एंड इफ यू नोटिस लिस्ट, सेट, मैप, ऑल थ्रीज आर एक्चुअली interfaces in collection framework. So if you have these interfaces, that means you can have implementation as well. Of course, nowhere you have to write array list or hash set or linked hash set or hash map, hash table. No, you are not going to supposed to do that. It will be managed by Spring framework itself. Okay, you don't have to write any implementation. But I'm just telling you what collection types are supported by Spring framework. Okay, this is it. So these are some frameworks. Oh, sorry, collections. Now let's put a requirement. Okay, so let's suppose we have a shop. Okay, and shop has some ID. I always take ID. Okay, even we are not going to use it, but ID is fine. Then let's say it has some name. Okay, and if it has a if when it's a shop, so it must have some items or properties, or you can say anything. So I'll say products. So as I'm saying products, not product, because it's a shop, it contains multiple types of products. So I'll say product of list, string type, right? So name will be of string, ID will be of int, and products as of collection type. So requirement is clear that we have a Pojo class which contains 3 fields, ID, name, products, and somehow we need to map or configure XML file. So Spring can convert this simple Pojo class into a bean class, right? We have to do something inside configuration file. So this is our spring.xml file, XML, and of course configure the XML file. I'll say this way, configure the XML file, and then what you'll get shop bean.
can say okay, leave it. We already know this thing, so let's keep it simple. That's it. Configuration file, and you'll get Spring Bean. That's it. Okay, so let's start with the class. Let me quickly jump over to Eclipse, close this. Going to create a class into this bean package, new Java class, and let's call this shop. Done. Then we will have IDs, so private int ID, then string name, then list of string, and that I'll call products. Okay, screen struct string, then products. Right? Let's generate its setter cutter. Okay, so simple class is ready. Nothing special about it. A simple Pojo class. Now let's configure this in XML file. Right? That's what I mentioned there. Close this file. We need to configure XML file so we can get Spring Bean. Right now it's a Pojo class. It's a Pojo shop Pojo. This is what we want. Okay, so going back to resources, so what I will do, I will keep that XML file separate. Yes, you can have multiple XML files if you want. You cannot just configure everything in one file. That's one good thing. So it's good for me to explain things further. So I'll say Spring core is done. I'll say Spring list or collection. Okay, so here I can keep all the collection stuffs. And let's remove this thing. So again, our file is empty, a blank configuration file. Let's start with mapping of this bean as a, Pojo as a bean. So bean tag you have start with. Then we have to add two properties here, ID and name. No, not name, class. So ID will be anything you can call. I will say shop, and here I have to give a fully qualified name. So it goes like com.sp core dot bean dot shop. Again, you can verify, hold control and hover. See, this works in every single XML file. We have testing this through servlet. We have tested this in Hibernate. Now we are testing the XML file. So pattern is same. If you want to clarify, just click and you will go there. Okay, so bean class is done. Now we need to initialize all the fields like ID and name. We know ID and name. We can easily do that. Property field is ID, and I can give value. Let's say 100. Tag close. Then I can use property, then name, then value ABC shop. Okay, and done. So these are two simple things. What about products? Because we have ID done, name done. What about products? How to configure products, right? So what I'll do, I have to use one feature from Spring. Well, what it says, okay, before that, let's run this much code and then we'll get back and see how to map this collection type in XML file. So back to tester, just copy paste it to save some time. It's shop tester done, and here let's remove extra stuffs. Okay, we just need this line because this will do what? It will read that XML file. So that's the flexibility thing, and I will copy that and give the name here. So now this file will read collection XML file. That's why we have liberty to, like, pick any file name. Okay, it's done. What's next? Then we need to say application context, get me the bean, and what's the bean name? shop, right? Then we know it's a type shop, so I'll pick from here shop and done. It will throw exception error actually, so I'll say shop. I'll cast it. Done. So this is also done. What else? Now we can print it. So let's say
shop ID is, then plus, then shop dot get the ID. So you can see I'm getting this ID from where? XML file. So ID in XML file is 100. So let's run this code and see is it coming or not. Yep, it's coming. Shop ID is 100. Okay, cool. Working. Let's print the name. So again, we'll use the getter of name, and here I'll say shop name is this. Okay, executed. Oh, we have error. What's the error? Okay, extra brackets. Executed the code again, and you can see shop name is coming ABC shop. Okay, let's do the change so we can see, yeah, it's actually working. Let's say 99. Okay, so we change the name. Let's run this code again to see the impact. Yes, it's checking the code, I mean the Excel file, and accordingly it's working. So we're getting both fields, but the topic is collections, right? How to map the collections. So for that, first of all, what's the name of the bean field? Products, right? So what I'll do, going back here, I'll create a property. What's the name? Properties. Oops, my bad. Products, right? And then it's a object type. It's an object type, so we need to give this type of ID. You can say space. Then we can say list because it's a list type. And then within list, you can give multiple elements. So what I will do, I will just say value because it's just a string type. So value, and inside value you can have multiple types. Let's say it's a shop for grocery or any any kind of shop. Let's say it has some stuffs for school, pen, pencil, eraser, whatever you want. Okay, here we go. So it's done. So what I did, I have added three elements inside this products list. We are giving value. And yep, now I'll go back here and we'll try to print it. So copy this line. Here I'll say get products and shop products are okay. And let's see the output. Run click, run as application, and here we go. We are getting all things right. So you can see lots of things are happening behind the scene. We just need to follow some flow or some steps. Create a simple Pojo class, map it in XML file. So the Spring Boot, my bad, Spring framework will convert this Pojo to a bean class. Once it's bean class, so we can access it by using application context reference. And this is its implementation. What this implementation is doing, reading the configuration file or the XML file and loads all the beans, and one of the bean is shop, so it reads it, and because it's already processed, so this has all the information which we have given in XML file, and then we are just using getter setters. Copy it. So let's put everything on one page. So have a look. Setters and getters. This is done. Then we have configuration file. Let's copy this. This is also done. So we have a bean mapping ready. What's next? Tester file. So tester file is quite straightforward. It's much easier as compared to Hibernate, I guess. It doesn't have much configuration and no extra file to create some connections. Okay, so since it's just a Spring core, that's why it's simple. Or maybe I'm just making it simple for you guys. It's not that simple. Okay, so there we go, and this is the output. So that's how we save collection in um, Spring Framework. What about other types? Like we have set, we have other list thing. So that you guys have to do in your homework, right? So I have shown you how to use set map properties. Oops, my bad. So you guys have to do all these in homework. Okay. Like I created one Pojo class, so you have to create one Pojo class for set, one Pojo class for map, and one for properties.
examples, one example for each collection type. Okay, I hope homework is clear. Like I have shown you how to use list. Likewise, you can go for set, map, and properties. That's your first homework. Okay, so this was about how to save collection, and that's how we do this. So you just have to focus on what's your field name. Once you are sure that what's your field name, so it's quite easy. It makes sense that what we are doing. We are just adding collections here. Okay, right here. Okay, this product is used here, and then these are products. Let's remove it this way. Okay, done. So this is how we save collections. Any question or doubt? No? Fine. सर Yes. सर जो हमने अपने मैवन प्रोजेक्ट में इस रिसोर्स फोल्डर बनाया है Hmm. सर अगर हम रिसोर्सेज की स्पेलिंग इधर उधर कर दें या फिर फोल्डर चेंज कर दें तो जो हमारा क्लास पाथ एक्सएमएल है वो उसकी वो रीड कॉन्फ़िगरेशन फाइल को वो करता मोस्ट है। प्रॉब्ली रीड नहीं कर पाएगा क्योंकि स्प्रिंग में जब ये लाइब्रेरी सेट करी गई है ना, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्जन है या कोई वर्जन ले लो, 3 4 5 डजेंट मैटर, जब आप कोई भी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी डालते हो तो डिपेंडेंसी मतलब हमने एक मैवन की डिपेंडेंसी डाली है इसमें। सो बाय डिफ़ॉल्ट इट नोज कि ये एक मैवन प्रोजेक्ट है क्योंकि डिपेंडेंसी सेट की है। अगर आप जार डाल तो जार की बात ही खत्म हो जाती है, पर यहाँ पे अगर डिपेंडेंसी सेट की है तो डेट मीन्स इट्स अ मैवन प्रोजेक्ट। एंड इफ इट्स अ मैवन प्रोजेक्ट डेट मीन्स देयर मस्ट बी अ फोल्डर विच इज कीपिंग ऑल द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे टॉम कैट में हमने देखा था इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल डिफ़ॉल्ट लोड हो जाती है ना, भी तो उसी तरह इसको भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क को या फिर हाइबरनेट को पता है कि ये मेवन प्रोजेक्ट है और मेवन प्रोजेक्ट में सारी कॉन्फ़िगरेशन आती है एसआरसी में रिसोर्सेज में। अगर आप स्पेलिंग उल्टी सीधी कर दोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये चलेगा नहीं कोड, और अगर चल भी गया तो रन टाइम एरर दे देगा। कलेक्शन मतलब क्या कहते हैं, कोड बिल्ड हो जाएगा पर जब आप प्रोजेक्ट को रन करने जाओगे तब एरर दे सकता है। तो बेस्ट सजेशन इज कि जो ये तीन फोल्डर्स हैं, एस आर सी मेन जावा, एस आर सी टेस्ट जावा एंड एस आर सी मेन रिसोर्सेज, ये तीनों फोल्डर आपके मेमोरी प्रोजेक्ट में होने चाहिए। ये नहीं है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी बिल्ड टाइम पर, क्योंकि ओके सर। तीनों मेवन को पता होता है कि यहाँ पे मेरे कोड, यहाँ पे मेरा सारा बिजनेस लॉजिक है, सारा कोड यहाँ पर है, टेस्ट के अंदर सारे टेस्ट केसेस हैं, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। और कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रॉपर्टीज फॉर्मेट में हो सकती है, एक्सएमएल में हो सकती है, प्लस हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं रन टाइम पर, फाइल्स यूज़ करते हैं, इमेजेस यूज़ करते हैं, ये सब हम इसके अंदर रखते हैं। तो जब बिल्ड होता है तो जितना भी यहाँ से सब उठ के जाता है, और जो रैपर बनता है जार फाइल या वॉर फाइल का, वो यहाँ से पिक होता है। ठीक है। ओके सर। Okay, so we have seen how to create bean, then we have saved collection. Now time to see object type as a field. अगर ज़्यादा तेज हुआ मुझे बता देना, क्योंकि मैं टॉपिक्स को उतना कवर करूँ जितना रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी है, टाइम जस्ट वेस्ट होगा आप लोगों का, डजंट मेक एनी सेंस। सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू पिक ऑब्जेक्ट टाइप एज अ फील्ड। जैसे हमने कलेक्शन को एज अ फील्ड यूज़ किया था अभी, राइट? अब जैसे यहाँ पे हमने कलेक्शन यूज़ किया था एज अ फील्ड, नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ ऑब्जेक्ट टाइप एज अ फील्ड। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि चीज़ें कनेक्ट रहे कि व्हाट एग्जैक्टली वी डिड हियर। Okay, so collection type as a field. So now we are talking about object. So let's create two objects then. Then we can map. We can have a has a relationship here. Okay, so let's do one thing. Mm, Again, let's pick some simple example like student. Again, ID. Again, name. Right? We these are two favorite fields. And then I'll create a class address. Let's say, and address can have phone number, and then address can have um, let's just state just two information is fine. And now every student will have their own address, right? So I can have address as a type here, right? String name and int id. Okay guys, so you can see now I am mapping a
field here. Earlier it was um, simple fields, then we saw collection. Now time to see object. So I have given all the types, what types you're going to pick, and let's see how to do this in Spring Framework as in a configuration file. So we have to create two class, student and address. So let's do this. Close. Going back to bean package, new class, student, done. Then let's create the fields required. So let's copy paste to save some time. Private. Okay, and we don't have address class, so let's create that as well. So address, done. We need two fields, long phone and string date. State, done. Let's create its field. Okay, done. Then going back, it is also fixed. Let's generate certificates for this as well. Okay, so we have a class, simple Pojo class. Clear this out. So address is just two fields, and student again two fields and one object type. Okay, fine. So we have two Pojo class, nothing new about it. Let's configure them in Spring XML file. So again, I'll create a separate XML file. So keep code simple. I'll say Spring objects, or let's say object. Okay, close this again. So again, everything is empty, blank. So you have noticed when I was creating object of student class, so it was asking first address. So let's do one thing. Always create your object first. So let's create this class first. Then we will use it in address student. So that we will see how. So time to create one bean for address, and that class is quite straightforward, right? It doesn't have any special type, just some primitive and one object type string. So let's map it. So first attribute I will use ID, next attribute I'll use class. So let's use the same name, it makes more sense here. Then com dot sp core dot bean dot address. Let's cross check, hold control, and yep, it's fine. Now it has two fields, right? Private long phone, private long string. So phone and state. So phone I will use first. So property name, it's not copied, so no worries. Phone, and let's say give a value. So okay, done. Then next property tag is state. So let's copy this, going back, paste it, so there will be no chance of error. And value, let's say okay, done. So we have two states, we have two fields, phone and state, and it's done. Let's test this first, then we'll create object of student class. So going back to tester, and again I'll pick one class. Please don't do this, type your own code, but when it comes to XML file, copy that XML file, but when it comes to Java file, you can type. What was that? Object tester, let's say. Object type tester. Okay, let's clear this out. Just one line we need it to read that configuration file. And object type. Okay, done. Now what's next? We need to get that bean, which we have just created recently. Address bean, and it's two fields. So we have a reference, application context, dot get bean. Then you need to give the address type, and then address. It will give an error. So let's cast it address, and error gone. What's next? Need to fetch two properties which we have given here, phone and state. So sys out
phone number is, then address dot get the phone. Okay, executed the code, and here we go. We are getting the value. Like now, guys, we can say state is, and we'll say get state. Executed the code, and you can see we are getting both fields. Okay, nice. We are getting both fields. So let's get a separator. We'll get one more bean of student type, and we will see. So going back to XML file, let's get one more bean. So bean ID student, then we have a class speak core dot bean dot student. Then we have to give a body, and inside body, first field is ID and name. Okay, so let's map it. So property ID, then value, let's say 007, tag close, then one more property, let's say name. Okay, value, so let's say round, done. So this will also work. We haven't mapped that object type. We will see how to do that, but for now let's test this much. So again, I'll use application context because this has the information for all the beans because it is reading this XML file. So application context dot get bean, then student, then student type here, student equals, and I need to cast it. Done. Then what's next? Just print the stuff. So let me copy paste something from here. Student ID is student dot get ID. Okay, and likewise I can get name as well. Okay, code executed, and here we go. We are getting all fields from XML file. Any question or queries so far, or anything which is not clear either here or Excel file? This is just a repetition. What we did yesterday, we are just repeating stuffs, but with some more properties or features. No question? Fine. So this was simple, right? ये हम already कर चुके हैं. ये हम कल भी कर रहे थे, हमने परसों भी किया था, हम आज भी वही काम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा उसको एनहांस कर दिया है. लिटिल बिट, नॉट मच. अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को मैप करना, राइट? ऑब्जेक्ट कैसे मैप होगा? उसके लिए बीन स्प्रिंग ने एक और टैग देकर रखा हुआ है. टैग तो एक्चुअली वही होगा, प्रॉपर्टी. तो नाम क्या है इस टैग का? सॉरी, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एड्रेस, राइट? दिस इज एड्रेस. ओके, डन. सो वापस जाएंगे एक्सएमएल में. इतना सेम रहेगा गाइज, इतना हमेशा सेम रहेगा. जहाँ आपके फील्ड है वो तो नाम सेम ही जाएगा, इसको आप नहीं छेड़ोगे. जो नेम है फील्ड का, यहाँ पर आईडी नेम एड्रेस, वही नाम यहाँ पे आपको एंटर करना, आईडी नेम एड्रेस. दिस रिमेन सेम. थिंग्स गेट चेंज वंस यू आर यूजिंग सम अदर टाइप. जैसे मैंने कलेक्शन में चेक करा था, तो कलेक्शन में यहाँ तक ठीक था, सेम नाम था जो हमने क्लास में दिया. उसके बाद उसकी बॉडी में चेंज हो गया, राइट? इसी तरह यहाँ पे बॉडी नहीं देंगे, यहाँ पे हम देंगे एक सिंपल सा एट्रीब्यूट, नेम इज रेफ, कि किस बीन को रेफर करेगा. तो हमारे पास ऑलरेडी एक बीन है एड्रेस की. बस खत्म हो गया. इतना करना था बस. आपको एक छोटा सा कीवर्ड लगाना है, एट्रीब्यूट लगाना है. एक्चुअली ये बीन का एक सब टैग है प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी का एक एट्रीब्यूट है रेफ, और इसमें हमको उस बीन का नाम पास करना है और आईडी पास करनी है जो उससे मैप करनी है. तो बस इतना हो गया. तो ये कनेक्टेड हो चुके हैं आपस में. स्टूडेंट के पास अब आईडी है, नेम है और एड्रेस है. एड्रेस कहाँ पे आ रहा है? ये. तो दिस एड्रेस इज दिस वन, और ये एड्रेस है क्लास का. मैं इमेज में क्लियर कर दूंगा. इतना पहले कोड रन करते हैं. तो अब मेरे पास स्टूडेंट के पास सारा डिटेल है, राइट? तो एक काम करते हैं, यहाँ से स्टूडेंट का एड्रेस और फ़ोन नंबर निकालते हैं. ठीक है? सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि स्टूडेंट के थ्रू हम एड्रेस का ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं. सो स्टूडेंट phone number is student. Now see guys what I'm going to do. Student, then dot get address,
डॉट गेट फोन, बस ये करना है आपको। लाइकवाइज आई कैन से स्टूडेंट डॉट गेट एड्रेस डॉट गेट स्टेट। ओके, okay, done. Let's run the code and see the output. Right click, run as application, and yeah, working. See, so now we are able to fetch all that information which we have given in address bean. यहाँ पे जो हमने वैल्यू दी थी वो अब हम फैच कर सकते हैं स्टूडेंट के थ्रू। सो ये थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट था और वो काम कर गया, हम वैल्यू फैच कर सकते हैं। अब लेट मी पुट ऑल दिस थिंग ऑन वन पेज, वन इमेज। सो स्पेंड सम टाइम, सी व्हाट्स हैपनिंग एंड देन लेट मी नो क्या इतना समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, सो स्टार्ट विथ this class. Okay, done. Setters and getters, cool. Then address class भी आ गया, address को ऊपर डिफाइन कर देते हैं, address class. Okay, then we need to map these things. So in Excel file, this is also done here. Okay, done. What else? Now we have to call all these beans. So copy it and done. Okay, so हाईलाइटेड वाली चीज़ इसमें क्या है कि हमने ये रेफरेंस बनाया था यहाँ पर। नोटिस गाइस, यहाँ पे जो एड्रेस का नाम दिया वो एड्रेस ये वाला है, ठीक है। जो एड्रेस यहाँ पे नाम दिया वो एड्रेस भी ये वाला है। सो ऑल दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। ओके, एंड सेम नाम फिर हमने यहाँ पे रेफर कर दिया। एंड हाउ इट इज हैपनिंग, ऑल बिकॉज ऑफ दिस रेफ एट्रीब्यूट, जो कि प्रॉपर्टी का एक एट्रीब्यूट है, रेफ। दिस इज एक्चुअली मैपिंग, what mapping it is doing has a relationship or has a mapping it is doing. Okay, so this is it. आपको जस्ट कुछ प्रॉपर्टीज याद करनी है, टैग्स याद करने हैं, एंड यू आर गुड इन एनी फ्रेमवर्क। स्प्रिंग बूट में कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं कि आपको याद ना हो। इट्स ऑल अबाउट थेरी, सारा कुछ रटना है एक तरह से। अगर आप लोगों को एनोटेशन याद हो गए, क्लासेस याद होगी, मेथड्स याद हो गए, तो आप फ्रेमवर्क में बहुत अच्छे हो। पर कोर जावा में ऐसा नहीं है। कोर जावा में कोई क्लास मेथड आपको याद नहीं करना। हाँ, थोड़ा फ्रेमवर्क्स की हायरार्की मतलब होती है, जो एपीआई की क्लासेस को याद करनी पड़ती हैं। व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल थिंग यू हैव टू एक्चुअली प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस कोई भी कोड नहीं लिख पाओगे। पर फ्रेमवर्क्स आर इजी। अब अगर कोर जावा समझ में आ गया तो फ्रेमवर्क्स आर रियली रियली इजी। कोई भी फ्रेमवर्क का आराम से सीख सकते हो अगर कोर जावा आपको आती समझ में अच्छे से। ओके, दिस इज द आउटपुट। सो दिस इज इट फॉर ऑब्जेक्ट टाइप्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर ऑब्जेक्ट टाइप्स। हो गया। सो रेफ कीवर्ड भी डन यहाँ पर। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। आपने नोटिस करा यहाँ पर जब हमने ये थोड़ा एक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। चलो मैं आगे कवर नहीं करूँगा, इतना आप लोग कर लीजिए। इतना समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड जब हमने कोड लिखा या फिर एक्सेल में फाइल लिखी हमने। ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ओके, सो वी हैव दिस स्टफ्स, राइट। सो द डिफरेंस इज कि जब हम लोग किसी प्रिमिटिव टाइप को यूज़ करते हैं स्प्रिंग में, देन वी यूज़ वैल्यू, राइट। ये भी एक int टाइप था। स्ट्रिंग भी प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट टाइप में मिक्स होता रहता है, तो दैट्स फाइन। पर दोनों एक प्रिमिटिव टाइप थे इसलिए यूज़ हुआ। यहाँ पे भी ये वैल्यू इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि प्रिमिटिव था। आईडी नाम यहाँ पे यूज़ हुआ तो प्रिमिटिव था। नाउ व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्ट टाइप्स, तब वहाँ पे हम रेफ यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस 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 एंड दिस ऑल आर प्रिमिटिव टाइप ऑब्जेक्ट्स। स्ट्रिंग को भी काउंट कर लेते हैं कई बार, but that's fine. Primitive types.
Okay, and ref is for object types. Okay, used for object types. Come on. ठीक है, एक छोटा सा फीचर है, याद रखिएगा, खत्म, बाकी ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ हो। सिंपल फंक्शनैलिटी है और इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें याद हो जाएंगी दिमाग में कि कलेक्शन कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है या फिर यहीं पे रैप अप कर दें, अप टू यू गाइस। या फिर थोड़ा सा वापस जो हमने अब तक पढ़ा है हल्का सा रिविजन कर लेते हैं उसको। यू गाइस टेल मी, वी स्टिल हैव लाइक। सर इतना ठीक है आज सर, आज के लिए बाकी सर होमवर्क दे देना आप ठीक है, थोड़ा तो बहुत। होमवर्क में फिर अच्छा चलो ठीक है, ये काम करो पहले, तो होमवर्क में ये इसी में काफ़ी टाइम हो जाएगा आप लोगों को। ये एग्जाम्पल फॉर ईच कलेक्शन टाइप, और इसमें और क्या कर सकते हो, मैं देखता हूँ वो जो हम डिस्कस करते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सारे टॉपिक्स नहीं कवर करने वाला, होमवर्क में रहेंगे मोस्टली आपके। कलेक्शन देख लिया, ऑटो देख लिया, बीन स्कोप, चलो बीन स्कोप भी करके देखना। बीन स्कोप भी सिंपल है, ज़्यादा उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हार्डली 10 मिनट्स का टॉपिक है वो। अगर मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग कम से कम एटलीस्ट 30 मिनट्स उसमें स्पेंड करना। क्या होता है मुझे बताओ, बीन स्कोप्स। नेक्स्ट इज बीन स्कोप्स विद एग्जाम्पल। ठीक है, इतना कर लेना, इससे ज़्यादा होमवर्क की जरूरत नहीं है आप लोग। इतना कर लो पहले, रन कर लो। देखो आइडिया ये है कि अगर आप इस कोड को रन कर पाते हो, सो ट्राई टू क्रिएट योर ओन एग्जाम्पल्स। बिना देखे बस एक स्क्रीन पकड़ो, कीबोर्ड पकड़ो और सोचो कि ये करना है मेरे को और ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करूंगा। इतना कर लोगे तो दैट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस के ऐसे काम हो सकता है। तो ये दो होमवर्क है। बाकी के जो रिमेनिंग कलेक्शन टाइप है इसके एग्जाम्पल बनाइए। एक, पर collection you have to create a separate class, separate project class, so that means 3 project class you have to create. And bean scope actually a concept है theory, excuse me, so एक bean scope एक theoretical concepts है, but you can write a example as well. So देखिएगा, दो टाइप्स होते हैं, सिंगलटन एंड प्रोटोटाइप। उसके एग्जाम्पल आप कैसे, मतलब कैसे प्रूव कर सकते हो कि हाँ दिस इज अ बीन स्कोप ऑफ प्रोटोटाइप, दिस इज बीन स्कोप ऑफ सिंगलटन टाइप। सो वन लाइन कोड है, ज़्यादा इसमें बड़ा काम करना नहीं है, एक सिंपल सा एक, अगेन एक एट्रीब्यूट और एक टैग यूज होगा और खत्म। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 10 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए आप इसको कवर करने की कोशिश करिएगा। टाइप्स बता दिए, सर्च करिए, 50 टॉपिक मिल जाएंगे आपको ऐसे। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट टाइप्स एंड कलेक्शन टाइप्स। सो इसको प्रैक्टिस करिए। लास्ट हमने क्या पढ़ा वो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार को। सो व्हेन वी स्टार्टेड विद स्प्रिंग फ्रेमवर्क, तो वहाँ पे मैंने आपको टॉपिक्स डिस्कस कर दिए थे कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है इसमें, क्या क्या टॉपिक्स मोस्टली पूछ जाते हैं इंटरव्यूज में। तो अगर आपको इतना काम आ गया तो स्प्रिंग को अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमने आईओसी देख लिया, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल देख लिया जो डीआई कहते हैं इसको, स्प्रिंग कंटेनर का फंक्शनलिटी देख लिया, कॉन्फ़िगरेशन टाइप देख लिया, एक्सएमएल के थ्रू थोड़ा सा एनोटेशन स्टार्ट करेंगे, मे बी टुमारो वी कैन ट्राई। ऑटो नहीं, अभी नहीं, अभी रुकते हैं थोड़ा सा, या फिर कर सकते हैं, ओके कल ट्राई करते हैं। ऑटो वायरिंग करेंगे एक्सएमएल से, फिर सेम ऑटो वायरिंग करेंगे एनोटेशन से। उसके बाद देन वी सॉ डिपेंडेंस इंजेक्शन। सो डिपेंडेंस इंजेक्शन दो तरीके से हो सकता है, सेटर के थ्रू और कंस्ट्रक्शन के थ्रू। सो इन माय क्लास आई हैव डन सेटर्स एंड आई हैव गिवन होमवर्क फॉर कंस्ट्रक्टर टाइप, कंस्ट्रक्टर से डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे अचीव करते हैं। टुडे वी सॉ कलेक्शंस के, कलेक्शंस कैसे काम करते हैं, तो और कितने कलेक्शंस स्प्रिंग कोर फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है या स्प्रिंग कोर मॉड्यूल सपोर्ट करता है। सो वी हैव सीन 4 टाइप्स, लिस्ट, सेट, मैप एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज एक्चुअली की वैल्यू पे काम करते हैं, जैसे की वैल्यू तो नहीं कहेंगे पर काइंड ऑफ की वैल्यू पे काम करता है, एक्जैक्टली सेम नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है मैप से। मैप तो की वैल्यू ही काम करता है, प्रॉपर्टीज बिट डिफरेंट बट मोर लेस क्वाइट सिमिलर। तो देख के एग्जाम्पल करिएगा। देन डेटाबेस को हाइब्रिड क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो देन वी सॉ कि क्या क्या तरीके होते हैं। स्प्रिंग जो आईओसी है और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। कोई भी अगर कोई भी स्टार्ट करेगा इंटरव्यू से और उसको स्प्रिंग कोर के एग्जाम्पल पूछना होगा किसी बिगनर से या फिर 1 या 2 ईयर पर्सन से, सो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन विल कम कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल होता क्या है और हाउ डू वी अचीव। सो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इज नथिंग बट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये अभी थोड़ा
समझ लो कि ऐसे एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स को मैप कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे हमने अभी किया था, हमने एक ऑब्जेक्ट टाइप का मैप करा, हमने कलेक्शन टाइप का मैप करा, इवन अगर प्रिमिटिव टाइप है तो उसको भी कैसे मैप कर सकते हैं। दैट वी अचीव थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन। उसके बाद व्हेन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग कंटेनर, दिस कुड बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्प्रिंग कंटेनर होता है क्या, व्हाट इज स्प्रिंग कंटेनर एंड व्हाट डज इट डू। So Spring Container is nothing but a Java classes which actually creates a virtual environment. Okay, एक virtual environment create करता है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, जो क्या करता है, मैनेज करता है लाइफ साइकिल ऑफ जावा ऑब्जेक्ट्स। तो ये मैंने क्रिएट करके बता कर रखा है कि ये जो बड़ा बॉक्स है ये JVM है, और इन वन बॉक्स यू कैन हैव मल्टीपल स्प्रिंग कंटेनर्स रनिंग। कंटेनर्स के नथिंग बट जावा क्लास। जावा क्लास एक ये कह सकते हो कि कनेक्शन क्रिएट करता है बहुत सारे, जिसके थ्रू एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट रन करते हैं। सो स्प्रिंग कंटेनर मैनेज द लाइफ साइकिल। सो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने समझा यहाँ पर कि जैसे कोड जावा में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्या लिखते हैं, पर्सन p इक्वल्स टू न्यू पर्सन। दिस इज अ मैनुअल वे, राइट? बट इफ यू वांटेड टू अचीव सेम थिंग और अचीव द सेम थिंग, यू कैन गो फॉर स्प्रिंग। सो आप क्या करोगे, इसको मैप कर दोगे इधर XML, जैसा हमने अभी किया था। हमने कहीं पे भी जैसे ये क्लास बनाई थी, एड्रेस क्लास, शॉप क्लास, स्टूडेंट क्लास, हमने कहीं भी ये इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं करा, हमने बीन क्लास यूज़ करी। तो बीन से क्या होता है, स्प्रिंग कंटेनर की लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। तो दो तरीके हैं, इधर यू कैन गो फॉर XML जैसा हमने भी किया, अदरवाइज एनोटेशन इज वन वन मोर वे। तो हम देखेंगे एनोटेशन कैसे काम कर सकते हैं और क्या उसमें रिस्ट्रिक्शन है और क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं। सो दीज आर स्टेप्स, क्रिएट अ मैवन प्रोजेक्ट। खुशबू ये आप लोग के लिए एक और गाइड ऑफ रिवीजन चल रहा है, तो नोटिस कर लीजिए। जब भी कोई फ्रेमवर्क पे काम करते हैं तो सबसे पहले हम मैवन प्रोजेक्ट पे ही बनाते हैं, मैवन या ग्रेडल। तो हमको मैवन प्रोजेक्ट आता है तो हमने एक सिंपल मैवन प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद स्प्रिंग 5 की लाइब्रेरी ऐड करी। दो स्टेप्स सिंपल है। तीसरे में हमने क्लास बनाया, जो हमने आज रिपीट किया है 3-4 बार, कि एक सिंपल पोजो क्लास बनाओ, उस पोजो क्लास को XML में मैप कर दो, यहाँ पे करके रखा हुआ है। जैसे मैंने पोजो क्लास बनाया, फोटो, आईडी, विड्थ, हाइट, इसके यहाँ पे आईडी को इनिशियलाइज कर दिया, हाइट और विड्थ इनिशियलाइज नहीं हुई, सिर्फ आईडी इनिशियलाइज हुई है। वंस यू डन और इतना करोगे तो आपको एक आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, इतना। और ये जो इंस्टेंस होता है न्यू क्लास पाथ XML, बस आपको एक ये लाइन याद करनी है, अगर आप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहे हो, कोई और फ्रेमवर्क इस पर डिपेंड नहीं है, या फिर ये किसी पर डिपेंड नहीं है। तो ये क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक तरह से इंस्टेंस बनाता है स्प्रिंग कंटेनर का। कंटेनर रीड्स योर XML फाइल, लोड्स ऑल द इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो इसी के थ्रू हम बीन निकाल लेते हैं, जो भी बीन आपने डिफाइन की है। तो मैंने बीन डिफाइन करी थी यहाँ पर, देरी आईडी लिखा फोटो विद स्मॉल p, same mean is defined here, get bean small photo, then you get the object, cast किया, फिर print कर दिया, बस। and when we do this we are actually achieving dependency injection, इतना कर दिया आपने अगर आपने, so we are achieving dependency injection by which mean by setter। जो setter हम डिफाइन किए, तो अगर आप setter को ओवरराइड कर दोगे, हटा दोगे, तो you will get this exception, not writable property exception। तो क्योंकि यहाँ पर स्प्रिंग कंटेनर को सेटर मिला ही नहीं, तो वो कहता है कि इनवैलिड प्रॉपर्टी आईडी ऑफ बीन क्लास, प्रॉपर्टी आईडी इज नॉट राइटेबल और हैज एन इनवैलिड सेटर मेथड। या तो राइटेबल नहीं है, कुछ उसमें रीड राइट के रेस्ट्रिक्शन लगे हुए, या फिर उसका सेटर ही नहीं है वहाँ पर। बस इतना खत्म। देन दिस इज अ कंप्लीट एग्जांपल कि एक प्रोजेक्ट क्लास बनाया, आईडी विथ हाइट रखा, इस प्रोजेक्ट क्लास को कॉन्फ़िगर कर दिया स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन में, सेम फील्ड के नाम यहाँ रखे, ऊपर नीचे कर दोगे नाम को तो गड़बड़ हो जाएगी, मैप नहीं होगा, और फिर व्हेन यू ट्राई टू गेट यू विल गेट देयर डिफॉल्ट वैल्यू। एंड देन क्रिएट इंस्टेंस ऑफ क्लास पाथ, गेट द बीन फ्रॉम XML, बीन ये यहाँ पर, फोटो ये यहाँ पे गया, देन प्रिंट द स्टफ्स एंड यू विल गेट ऑल द स्टफ्स फ्रॉम देयर। ओके, सो दिस वाज वी डिड यस्टरडे, और आज हमने ऑलरेडी देखा कलेक्शन कैसे सेव करते हैं स्प्रिंग में। सेम तरीका है कि एक क्लास बनाओ, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मेरे पास एक क्लास था, उसके अंदर एक फील्ड है प्रोडक्ट्स, जो कि कलेक्शन टाइप है। सो आईडी एंड नेम दे आर फाइन बिकॉज दे आर प्रिमिटिव टाइप्स, बट एज सुन एज वी केम अक्रॉस एनी कलेक्शन टाइप, सो उसका एक अलग से ही टैग है। जैसे यहाँ पे लिस्ट है, ऐसे आपको मैप मिल जाएगा, सेट मिल जाएगा, और प्रॉपर्टीज भी मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज मिलता है, प्रॉप्स मिलता है उसके लिए। एक हल्का सा दिखा देता हूँ कैसे काम करता है वो। जैसे ये फाइल है, तो कुछ प्रॉपर्टी रखा, इसके अंदर जाएंगे आप लोग, लिखेंगे प्रॉप्स, ठीक है, और इसके अंदर फिर की वैल्यूज चलती है यहाँ पे, की यहाँ पे कुछ इसका की हो गया और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई। तो मैं खुद बना दूंगा, लेकिन फ़ायदा है कि फिर आप लोग पढ़ोगे नहीं ना, इसलिए मैं इसको ये छोड़ दे रहा हूँ। तो ट्राई करिएगा प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करता है।
तो कलेक्शन है चार टाइप के। हमने एक लिस्ट को देखा, लिस्ट के लिए लिस्ट टैग है, लिस्ट टैग के अंदर फिर वैल्यू और फिर ये सब काम कर दिया। तो दिस इज कलेक्शन टाइप एज ए फील्ड। देन डन डन। उसके बाद वी सॉ द एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप कि अगर ऑब्जेक्ट टाइप कलेक्शन तो क्या होगा, सॉरी नॉट कलेक्शन, सिंपल फील्ड है। तो वी हैव रिक्वायर्ड फॉर एड्रेस एंड स्टूडेंट एंड एड्रेस इज एम्बेडेड इनटू अ स्टूडेंट क्लास एज अ फील्ड, देयर इट इज। सो पहले जो डिपेंडेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, एड्रेस, इसके दोनों फील्ड इनिशियलाइज कर दिए। देन वी हैव गॉन फॉर मेन क्लास स्टूडेंट, और वहाँ पे जो एड्रेस फील्ड था उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया बाय यूजिंग रेफ। बस फिर बाकी तो अपने पास सिंपल था। जैसे ही सब कुछ फिक्स हुआ और जो भी फील्ड्स के नाम थे अगर आपने सही दिए तो आराम से यू कैन गेट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम योर एक्सएमएल फाइल। सो हमने कहीं भी न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं किया इन दोनों या पुरानी क्लासेस के लिए। स्प्रिंग कंटेनर विल डू दैट फॉर अस बाय डिफॉल्ट। और ये तरीका है अगर आपके पास वैल्यू, अगर आपका प्रिमिटिव टाइप है देन यू हैव टू गो फॉर वैल्यू। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप है जैसे कि एड्रेस, सो यू हैव टू यूज रेफ एंड मेक श्योर दिस बीन इज देयर। अगर बीन नहीं डिफाइन करोगे, जैसे मैंने मानो नाम चेंज कर दिया है ना, मैंने एड्रेस 1 कर दिया, अब इसको ढूंढना है एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस 1, और ऑब्जेक्ट टाइप टेस्ट पे गए, यहाँ पे भी मैंने एड्रेस 1 डाल दिया कि एटलीस्ट ये तो चल जाए ऊपर वाला। रन किया, एप्लीकेशन किया। अब आगे एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, नो बीन नेम्ड एड्रेस अवेलेबल। तो क्यों हुआ, क्योंकि स्टूडेंट के पास एक बीन है एड्रेस, इसका नाम क्या है एड्रेस, पर अगर वो एक्सएमएल फाइल ओपन करेगा तो यहाँ पे एड्रेस के नाम से कोई बीन ही नहीं है, यहाँ पे तो एड्रेस 1 है। तो जैसी ही फाइल लोड हुई, आपका कोड तो रन ही नहीं करेगा, उसके पहले ही यहाँ पर ये जो लाइन है टेस्टर वाली, ये एक्सेप्ट थ्रो कर देगा, ये बोल देगा ये कर रहा है इस फाइल को रीड। इसको पता है इसके अंदर दो मीन्स है, स्टूडेंट एंड एड्रेस। जैसे स्टूडेंट की बारी आई इसने चेक करा, ओके 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 एंड रेफ एड्रेस, ओके तो देयर मस्ट बी बीन एड्रेस। तो इसने पूरा चेक करा, यहाँ पे एड्रेस तो है नहीं, यहाँ पे एड्रेस 1 है, तो एक्सेप्शन आ गया। क्या लिखा हुआ है, एरर क्रिएटिंग बीन विद नेम स्टूडेंट, देखा स्टूडेंट का नाम आ गया, डिफाइंड इन दिस कैन नॉट रिजॉल्व रेफरेंस टू बीन एड्रेस while setting bean property address। so इसने देखा कि एक रेफ है जिसमें एक बीन का नाम लिखा हुआ है, पर यहाँ तो बीन वो डिफाइन है ही नहीं। इसको फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे इसको कर दिया रिवर्ट, इसको रिवर्ट कर दिया। अब रन करते हैं तो इसको एड्रेस मिल जाएगा और कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग मिक्स एंड मैच करिए, जैसा भी कोड, पहले कोड को चलाइए, जब सब कुछ चल जाए आपके अकॉर्डिंग फिर वैल्यूज चेंज करिए, दैट्स हाउ यू विल लर्न। जब मैं सीख रहा था मैं भी पहले कोड जो था रन करके देख लिया, चल गया परफेक्ट, कोई इशू नहीं है, फिर धीरे धीरे उसमें चेंज करो और देखो कहाँ इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझ तो जाओगे, फिर 2 दिन में भूल जाओगे। जब तक खुद से चेंज नहीं करोगे कि मैं यहाँ पे स्टेट की जगह ये कर दिया मैंने, अब क्या होगा, अब मुझे भी नहीं पता क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, रन कर लूँगा कोड को, चलो। तो ये एक तरीका है कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपको कैसे याद रखनी है। अब क्या बोल देगा, इनवैलिड प्रॉपर्टी, ये तो इस बीन में डिफाइन ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। तो स्प्रिंग कंटेनर गेट्स कंफ्यूज कि व्हाट्स हैपनिंग। ऐसे ही अपने हिसाब से देखिए कि फील्ड का नाम चेंज किया या क्लास का नाम चेंज कर दिया, बीन हटा दी या फिर क्लास ही हटा दिया या एक्सएमएल फाइल ही उड़ा दी, तो क्या क्या एक्सेप्शन आती है। तो मोस्टली यू विल गेट नॉट राइटेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्शन, जब आपकी फील्ड में वो डेटा ही नहीं है तो जो राइट कर सके। ओके, सो आई होप यू गाइस हैव ओवरव्यू व्हाट एग्जैक्टली स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज डूइंग फॉर नाउ और हम उससे क्या अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसमें फर्दर अभी जो काम है वो आपको करना है। आगे जो हम क्लास देखेंगे कि एनोटेशन कैसे कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है और क्या अलग तरीके हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। और देखते हैं अभी क्या अपने पास ऑलरेडी ये वीक है, तो इस वीक स्प्रिंग को ही प्रैक्टिस करेंगे फ्राइडे तक, और फिर नेक्स्ट वीक से, और मे बी अगर टाइम लगा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क जल्दी खत्म हो गया तो मे बी ऑन फ्राइडे आई पिक स्प्रिंग बोट, सो यहाँ से ये स्प्रिंग बोट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइज, कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज लेट्स रैप अप। एनीथिंग? नो? No, sir.